Hello, students. I hope all of you are good. Students, stay home and be safe, but don't ignore the study. So let's come on second chapter of history. Already I have told you that it may be possible that due to COVID-19, first chapter will be deleted uh, because it was deleted in the last session, right? So now we are going to start second chapter, writing and city life. The concept of this chapter, in this chapter we will study seven concepts. First is Mesopotamia and its geography, but before this we will study its introduction also, right? And second concept which we will study in this chapter, that is significance of urbanism, right? Significance means importance, urbanism शहरीकरण शहरीवाद, right? एंड मूवमेंट ऑफ गुड्स, थर्ड कंसेप्ट हम स्टडी करेंगे मूवमेंट ऑफ गुड्स इनटू सिटीज, राइट? एंड फोर्थ इज डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग एंड in the development of writing we will study some sub concepts. The system of writing we will study and the uses of writing. And fifth concept is urbanization in southern Mesopotamia. Southern Mesopotamia, it is also important. Urbanization first emerged in southern Mesopotamia, and in this we will study about the temples and about the kings, right? And sixth concept of this chapter will be life in the city, and last is the legacy of writing. So all these concepts we will study in this chapter one by one. So let's start. Writing and city life, ancient Mesopotamia. First, I told you that before discussing the main concept, we will study the introduction. Basically, it is given on page number 29 in your book. Okay, so let's start the introduction. Mesopotamia is derived from two words. Mesos meaning middle. Already I have told you that in this chapter we will study Mesopotamian civilization. Okay, so first we come to know what do you mean by Mesopotamia. Mesopotamia is derived from two words. Mesos, the meaning of Mesos is middle, and Potamus, the meaning of Potamus is river, right? So Mesopotamia means land between two rivers. वो जो टू रिवर्स के बीच की लैंड है उसको मेसोपोटामिया बोला जाता है, और जो मेसोपोटामिया है वो यूफ्रेट्स और टिग्रिस रिवर के बीच में है. टुडे इट इज़ पार्ट ऑफ इराक. ये इराक का पार्ट है. मेसोपोटामिया इज द पार्ट ऑफ इराक, राइट? सो मेसोपोटामिया वॉज नॉन ऑफ इट्स. मेसोपोटामिया किन चीज़ों के कारण जाना जाता है? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी है जो लेगेसीज रही हैं मेसोपोटामिया की, जिसने मेसोपोटामिया को बहुत ज़्यादा है जो एक तरह से फेमस बना दिया? दैट इज़ राइटिंग स्टाइल, राइट? राइटिंग, it is estimated by the archaeologist or historian that the writing first emerged in Mesopotamia. And the city life of Mesopotamian people, that was very famous, right? And trade, Mesopotamians economy based on the trade, and trade played an important role in the economic and social life of the Mesopotamian people, right? And literature also the important. Basically Mesopotamian believe to record the things, right? And they believe to write, and that literature help the archaeologist or historian to reconstruct the
Mesopotamian history. And another thing the Mesopotamian people gave us, that is the mathematics. There is a lot of contribution in mathematics of Mesopotamian people. And next is astronomy. Basically Mesopotamian people did well in astronomy also, right? In the beginning the land was called Sumer and Akkad. In the beginning the Mesopotamian land was called Sumer and Akkad. Babylonia was the southern region, the important region, and became important after 2000 BCE. Babylonia southern region है and it is very important and it became important after 2000 BCE. Assyria was the region where Assyrian established their kingdom in the north by about 1100 BCE, right? So Assyria was a region, Assyria एक region है where Assyrians established their kingdom, जहाँ पर Assyrian लोगों ने Assyria से जो संबंधित Assyria जाति से जो संबंधित लोग थे उन्होंने वहाँ पर है जो अपनी kingdom establish किया in north के अंदर by about 1100 BCE के आसपास. And languages, what about the languages of the Mesopotamia? The three important languages were spoken in Mesopotamia: Sumerian, Akkadian and Aramaic. These are the important Sumerian jati, Sumer jati se already we have studied about that Mesopotamia at the beginning is called Sumer and Akkad. So Sumer se Sumerian and Akkad se Akkadian, and the third language which was used to speak in Mesopotamia, that is the Aramaic, right? And sources means sources. Which type of sources tell us about the Mesopotamia? ऐसे कौन से sources हैं जो हमें Mesopotamia के बारे में बताते हैं? Basically buildings also. Our archaeologists or historians studied the buildings to know about the Mesopotamia, and the statues also used to reconstruct the history of Mesopotamia. Ornaments also tell us about the social differences and social and economic condition of Mesopotamian peoples. And grave also basically create the social differences, right? And those also tell us about the status of the people, and as well as these were very helpful in construction the history of Mesopotamia, right? Mesopotamia की हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने में है जो काफ़ी हेल्पफुल करते हैं. टूल्स ऑल्सो प्ले an important role to reconstruct the Mesopotamian life. And seals also tell us about the Mesopotamia civilization, right? And the last and very important, written document. The Mesopotamian people believed in written records, and those written records or the written documents which known as manuscript also played an important role to tell us about the Mesopotamian people and Mesopotamian civilization. The first concept of this chapter is Mesopotamia and its geography. Mesopotamia and its geography. Let's start now. First point is Iraq is a land of diverse environment. Iraq एक diverse environment वाली land है, right? क्योंकि उसका जो environment है वो unequal है different regions में, right? Second point, northeast lie green undaunted plain means northeast के अंदर है जो green undulating
डुलेटिंग जो प्लेन्स है, अनडुलेटिंग प्लेन, फैला हुआ लहराता हुआ जो प्लेन एरिया है, ग्रीनरी है वो फैला हुआ है। एंड ग्रेजुअली राइजिंग टू ट्री कवर्ड माउंटेन रेंजेस, और फिर धीरे धीरे ये है जो ट्री कवर्ड माउंटेन्स जो रेंजेस हैं उसके रूप में उभर जाता है। विद क्लीन स्ट्रीम्स मीन्स जो क्लीन और साफ पानी की जो धाराएं हैं, स्ट्रीम्स धारा, नहरें या रिवर्स कह सकते हैं, वो वहाँ पर है जो पाई जाती हैं। वाइल्ड फ्लावर्स आर देयर and with enough rainfall, because this region received the enough rainfall which is very helpful to grow crops. And here agriculture began between 7000 and 6000 BCE। 7000 और 6000 BCE में यहाँ पर एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गई थी। थर्ड पॉइंट इज इन नॉर्थ देयर इज ए स्ट्रेच ऑफ अपलैंड कॉल्ड स्टेपी। एक अपलैंड है जिसको स्टेपी बोला जाता है नॉर्थ के अंदर, या स्टेपी ग्रासलैंड है। ये स्टेपी है जो ये ग्रासलैंड है। वेयर एनिमल हर्डिंग ऑफर पीपल ए बेटर लिवलीहुड देन एग्रीकल्चर। वेयर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल was animal herding, and it was a better livelihood than agriculture. Sheep and goats produced meat, milk and wool in abundance. And sheep and goats produced meat, milk and wool for the Mesopotamian people. Next point is in the east, tributaries of Tigris. Already we have studied Mesopotamia located between the two rivers Tigris and Euphrates, right? So tributary क्या होता है? जब ट्रिब्यूटरी, जब छोटी छोटी रिवर जो आकर टिग्रिस में मिलती हैं, उन रिवर्स को ट्रिब्यूटरी बोला जाता है, राइट? सो ट्रिब्यूटरीज ऑफ टिग्रिस प्रोवाइड रूट फॉर कम्युनिकेशन इनटू माउंटेन्स ऑफ ईरान। जो टिग्रिस की ट्रिब्यूटरीज हैं, उसकी सहायक जो रिवर्स हैं, दे प्रोवाइड द रूट ऑफ कम्युनिकेशन का रूट प्रोवाइड करती हैं इनटू द माउंटेन्स ऑफ ईरान की माउंटेन से। एंड फिफ्थ पॉइंट इज द साउथ इज ए डेजर्ट। जो साउथ पार्ट है मेसोपोटामिया का, इट इज डेजर्ट द प्लेस, बट दिस इज द प्लेस विद द फर्स्ट सिटीज, जहाँ पहला सिटी एमर्ज्ड हुआ, एंड राइटिंग ऑल्सो एमर्ज्ड देयर, राइट? यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस कैरी लॉर्ड्स ऑफ सिल्ट। यूफ्रेट एंड टिग्रिस बेसिकली कैरी लॉर्ड्स ऑफ सिल्ट्स, मीन्स जो छोटे छोटे कण अपने साथ बहा कर लाती हैं, एंड डिपॉजिटेड ऑन द फ्लड फील्ड्स। और इस साउथ रीजन का जो फ्लड फील्ड्स हैं, यहाँ पर उनको डिपॉजिट कर देती हैं। इट मीन्स द लैंड ऑफ साउथ इट इज़ फर्टाइल, डेफिनेटली डेजर्ट, बट जो इट इज़ suitable for some crops. The small channels of Euphrates and Tigris functioned as irrigation canals, right? Small channel of यूफ्रेट्स के छोटे और टिग्रिस के छोटे छोटे चैनल्स फंक्शनड एज इरिगेशन कैनाल, वो इरिगेशन कैनाल के रूप में वर्क करते हैं। एंड फिश वॉज अवेलेबल इन रिवर्स, और जो फिश है वो रिवर्स में अवेलेबल होती है। एंड डेट पाम्स गेव फ्रूट इन समर। डेट पाम्स खजूर के ट्रीज होते हैं, उनसे समर में है जो फ्रूट मिलता है। सो दिस इज द जोग्राफिकल, दीज आर द जोग्राफिकल फीचर्स ऑफ मेसोपोटामिया, राइट? सो regarding this, you have to give the answers of these questions. What do you mean by Mesopotamia? What do you mean by Mesopotamia? Explain its geographical features, right? Which languages were used to speak in Mesopotamia, and which sources you will use to know about the civilization of Mesopotamia? मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन के जानने के बारे में आप कौन कौन से सोर्स यूज़ करेंगे, राइट? कौन सी लैंग्वेज मेसोपोटामियन पीपल बोलते थे,
ये इन सब के आंसर है जो आपको इन्हीं से निकाल कर रखने हैं, आपको अब खुद फाइंड आउट है जो आंसर इन नोट से करने हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।